Hello guys, my name is Nandini. My good name is Someshri. My nickname is Nandini. So today I will be sharing about my NEET journey. I am a 17-year-old child, a student, yeah. So I have given my 12th class board exams this year as well as I have cracked NEET exam, NEET 2025. In this video it is completely honest. I have not scripted anything. Very honest about my preparation. हाउ आई प्रिपेयर्ड, कैसे मैंने प्रिपेयर करा था क्लास 11 से। मैंने क्लास 11 से ही स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। क्लास 11 से कैसे मैंने प्रिपेयर करा था। सो आई स्कोर्ड 94% इन माई ओवरऑल क्लास 11th in my school, and in class 12th I was able to score 95.6% with like physics में 96, chemistry में 98 and biology में 98. Along with that, in NEET exam I have scored 570 marks out of 720 with an all India rank of 5403. As you know, this year NEET का exam थोड़ा tough था, relatively थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा tough था. So I will be sharing my journey. So in class 11th starting I joined Akash Institute. आकाश इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन करा था. इट वॉज अ स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर कि वॉट वॉज द अप्रोच ऑफ द टीचर्स, हाउ माई 11th वेंट, हाउ माई 12th वेंट, and how I finally gave the exam. So in my 11th grade I joined Akash Institute. It was like a school management school integrated program, sorry. So our classes started from May 1st. The classes were good, but I faced major difficulty in physics, particularly because they were teaching very slow. I also had to manage school. I was not a dummy student at that time. So in the initial phase definitely I faced problems. लाइक पहले तो यूनिट डायमेंशन हो गया था आराम से, वो तो आसान चैप्टर होता है. देन काइनेमेटिक्स, देन मेनली प्रॉब्लम आपको आता है कहाँ पे, NLM, वर्क पावर एनर्जी एंड रोटेशन मोशन के टाइम पे. वहाँ पे आई फेस प्रॉब्लम. सो एट दैट पॉइंट आई हैड टू जॉइन फिज़िक्स वाला का अर्जुना नीट मैंने वहाँ से कंटिन्यू करा था फॉर फिज़िक्स. Organic chemistry also I was not that good. I was not doing that good in organic chemistry at that period of time. Like ending tak aate aate first exam I was able to score like a 705 out of 720 in AIITS, but last exam aate aate like in my one of my term test I scored the least marks. Like in my 2 years of preparation NEET में तो उससे ज़्यादा कम आ गए. That is a different thing. 580 I was able to score. उसमें वो लास्ट वाले सारे चैप्टर्स आ रहे थे. तो डेफिनेटली माई 11th was not that great, right? But still like, so I just want to say कि आपका अगर 11th अच्छा नहीं भी गया है then also you can like come back in class 12th. लाइक बट ऐसा भी नहीं हो कि 11th में आपने कुछ नहीं पढ़ा, राइट? सो 11th में आपको कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा. लाइक एटलीस्ट यू हैव टू स्टडी 6 hours a day. एंड आई ऑलवेज बिलीव कि क्वालिटी इज़ वेरी मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वान्टिटी. क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब क्वालिटी स्टडीज़ आपको करनी होती है. लाइक आप ऐसा करो, फ़ोन में डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो आप टाइमर सेट करके रखो कि व्हाट्सएप इतना. लाइक आई एम नॉट टेलिंग कि आप कम्प्लीटली यूट्यूब व्हाट्सएप वो कुछ भी ना चलाओ. यू कैन यूज़ इट बट देयर शुड बी अ लिमिट टू योर यूज़, राइट? एंड ऑल्सो yeah, that is how my 11th went away. Or I will also be giving you some tips while sharing my journey. Then 11th तो वैसे ही गया था. Like yeah, I had to face a lot of problems. My biology was good, but botany I had to face problem because the teacher was not good. वहाँ पे मतलब then they were not teaching well, right? Then in class 12th ऐसे से मेरा 11th वो निकल गया. एंड बट स्टिल आई ट्राई टू डू अ लॉट बाय माई सेल्फ. तो मुझे ऐसा ही लगता है कि इफ़ योर कोचिंग इज़ लाइक नॉट दैट गुड, यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ. आप बहुत सारे रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर फ्री ऑन यूट्यूब एज वेल. जैसे कि बिफोर परचेजिंग द फिज़िक्स वाला बैच आई एक्चुअली सॉ अलग सर्स लेक्चर्स एज वेल. तो आपको ऐसे मैनेज करना है हाउ यू हैव टू डू. अगर आपका वो आपको देखो, आप इन द एंड उनका कुछ जाने वाला नहीं है. आपका you are the one who is going to face the consequences if you are not getting selected. So yeah,
जैसे भी प्रॉब्लम्स हो you have to manage and you have to find other resources to complete it, because right now internet तो बहुत, there are a lot of resources that you can solve. So the books that I used were also like आकाश के modules. मैंने पूरा भी नहीं solve करा है, I will be very honest. In class 11th I was in physics only, I was able to do like यूनिट डायमेंशन पूरा करा था. काइनेमेटिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन आई डिड कम्प्लीटली, बट मोशन इन प्लेन मैंने लाइक आई विल से 90, नहीं मोशन इन प्लेन भी मैंने करा था, बट फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आई कुडंट कंप्लीट एनी ऑफ माई मॉड्यूल्स. मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं करे, रैदर आई ओनली प्रैक्टिस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट इज़ 36 ईयर ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम MTG. मैंने उनका आई हैड परचेज्ड दिस previous year books of MTG, that is PCB ka. I did previous year questions from that, and yes, I did all of the previous year questions that were like 36 year old previous year question, because yeah, previous year questions they do hold a lot of value in NEET. तो मैंने previous year के सारे questions solve किए थे at that time. Then I couldn't do any modules. मैंने वो उनका MCAPS भी नहीं करा था, Catalyst भी नहीं करा है. Like I did a bit of them. Like obviously completely मैंने नहीं complete किया. Bit of them भी मैं अगर बोलूँ तो 1 to 2% only. Yeah, so at that point previous year questions and the questions that I used to see in lectures, right, video lectures, उनको मैं बहुत practice करा करती थी. Then I would also like to mention that this video is definitely not sponsored. This is my own thing that I'm sharing with you. I also watched the mind map series. Mind map series मतलब वो NEET 2024 के लिए जो mind map series था, that helped me to make short notes. Yes, short notes really helped me a lot. जब revision करने के लिए short notes are the best. तो one tip from me that चैप्टर यू कंप्लीट, आप ऐसे अप्रोच कर रहे हो, लेक्चर्स आपने देखा, आप क्लास में हुआ, आप यू रिवाइज एवरीथिंग, मतलब रिवाइज एवरी डे. मतलब आपका अगर लाइक 5 पेजेस अभी आपका पढ़ाया जा रहा है ना, आप उनको उसी दिन रिवाइज करो एंड रिलेटेड सम क्वेश्चन यू सॉल्व जो क्लास में करवाते हैं आपके, राइट. तो शॉर्ट नोट्स चैप्टर एंड होने तक बनाओ. इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक, लाइक आई वॉज नॉट एबल टू मेक अ लॉट ऑफ शॉर्ट नोट्स लाइक ड्यूरिंग द चैप्टर्स. सो एट द एंड जब थोड़ा टाइम था, लाइक जनवरी, आई स्टॉप गोइंग टू स्कूल इन जनवरी, बिकॉज मुझे पता था अगर स्कूल हमेशा जाती रहूँगी तो लाइक मेरा तो होने वाला नहीं है, मेरा 11th पूरा बर्बाद हो जाएगा. सो आई डिडंट गो टू स्कूल लाइक इन द एंड ऑफ दिसंबर, जनवरी फरवरी तक नहीं गई थी मैं. फरवरी एंड तक हमारा 11 का स्टार्ट हो गया था. तो इन दैट पीरियड आई वॉच द माइंड मैप सीरीज़, उससे सारे पॉइंट्स कलेक्ट किए. वन शॉट तो मैंने नहीं देखे, बट आई वॉच द माइंड मैप सीरीज़. मैं वो मुझे बहुत हेल्प किया इन द मेकिंग ऑफ शॉर्ट नोट्स. आफ्टर दैट व्हेन माई 12th began, I went to Akash का Achiever batch. That batch was really good. Yeah, I will like to say that average Akash batches, I will not say they're completely bad. Some teachers are definitely very nice, but mostly they don't focus on you that much. You don't get that much of tests. Sometimes our tests were multiple times they were cancelled because course was not completed at time. So I will just like to say ki yes, average Akash batches are good. They are good, like फ्रॉम 100% 10%, 90% ऑफ देम आर जस्ट लाइक, क्योंकि बच्चों का ही मन नहीं होता उन बैचेस में पढ़ने का. एंड ऑल्सो द टीचर्स आर लाइक, some are good, I will say some are good, ऐसे नहीं कि completely they are not good, some are good. But yeah, I will say if you're an average student you may face problem at Akash Institute if your coaching teachers are not cooperative with you. Some of my teachers in class 11, they were cooperative. From the 4 teachers, some were cooperative, but most, yeah, I will say most, so you can like 3 out of 4 like yeah, most they were like, वो ऐसा कोर्स को ऐसा ना, they were not teaching properly, that is the thing. and बहुत सारे चीज़ें वो skip कर रहे थे. and that was I knew the like, और question तो solve होता नहीं है. आप ऐसे ऊपर ऊपर से जब पढ़ाते हो तो question तो solve नहीं होगा, right. Glad that my principals actually talked with the institute, and as I was performing quite well in AITS, so AIATS, so I was able to go to the Achiever batch, and Achiever batch is definitely good. Teachers were nice over there. Chemistry sir was extremely nice.
Yes, and the tests were amazing. Like हमारा हर टाइम पे टेस्ट होता था. That was really really amazing. But also I faced a bit of problem in understanding physics. So yeah, I also purchased Lakshya NEET. तो मैंने ना क्लास मतलब नीट का प्रिपरेशन I will say I have done with both Akash and physics wala. Both have like a very major role in my preparation. Particularly, हाँ, and in 12th class I was very particular about solving modules. मैंने modules solve करे हैं. I didn't solve momentum booster, but know your NCERT मैंने solve करा है. Mind maps भी मैंने जो NCERT mind maps उसको भी देखा था. And I also continued to do my previous year questions. Yeah. So that was all of my journey, and after that I will be talking about my NEET day. So obviously हाँ, तो from my class 11th and class 12 what I want to summarize is that like आप पूरा फोकस करो अपनी पढ़ाई पे, ठीक है. जो जिस दिन पढ़ाया जा रहा है उसको उसी दिन ही कंप्लीट करो, राइट. ऐसे बैकलॉग्स बिल्कुल भी मत रखो. बैकलॉग्स आर वेरी वेरी हार्मफुल. अगर आप एक दिन नहीं भी पढ़ पा रहे हो, टेक आउट एक्स्ट्रा टाइम निकालो एंड ऑल्सो यू ट्राई टू कंप्लीट इट. ऐसे बैकलॉग अकोमुलेट बिल्कुल भी नहीं करना है आपको. टेस्ट देना है, येस, टेस्ट एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई यूज़ टू डू दैट. टेस्ट एनालिसिस आपको करना है, टेस्ट देना, सारे टेस्ट देने. आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, लाइक मैंने वो टॉपिक नहीं भी पढ़ा होता है ना, पर्टिकुलरली दैट वाज द केस इन क्लास 11th. 12th में ऐसा नहीं था. 12th में आई वॉज लाइक I was serious in both 11th and 12th, but 11th में because that was a faculty problem definitely. So टेस्ट भी नहीं होते थे, तो yeah, I got told you the tests were cancelled. So वो क्या होता था ना, क्वेश्चन का अच्छे से आई वॉज नॉट एबल टू assess myself, right? So I had to face problem, but let it be. 12th में आई वॉज़ वेरी पर्टिकुलर कि मुझे सारा कुछ पढ़ के जाना है. तो 11th में अगर मैंने पढ़ा भी नहीं होता था ना कुछ, लाइक पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक का टेस्ट है, मैं आई हैव नॉट डन दैट मच ऑफ ऑर्गेनिक. व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ जस्ट गिव द टेस्ट. जो आ रहा है आने दो, आपको टेस्ट देना है. पढ़ने के बाद आप फिर से उसको एनालाइज करो कि ये कैसे हो रहा था, कैसे होगा, देन यू कैन डू इट, राइट. बट अवॉइड नहीं करना है टेस्ट को. You should not avoid any short of your test. Sorry for the background noise. Yeah, that is the thing. और आप short notes बनाना है, revise करना है, questions ज़्यादा solve करने हैं. Definitely looking at the difficulty level of NEET 2025, you have to put more efforts on like practicing a bit harder questions. Bit harder questions or a high level के questions also you should practice. Moving to my 2025 NEET 2025 का experience, I was damn confident that I can score more than 700, right? So I went to the center at 11:30. तो मुझे 3 घंटा पूरा वेट करना था. बैठ ही रही थी मैं फर्स्ट जाके पहुंच गई थी सेंटर में. माई सेंटर वॉज रियली गुड. मतलब उन्होंने वैसे ही 10 मिनट लिया होगा एग्ज़ाम टाइम का, एंड दे वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट, या 10 मिनट मैंने, बट दे वर वेरी पर्टिकुलर, द इन्विजिलेटर्स दे वर वेरी पर्टिकुलर. माई एग्ज़ाम सेंटर वॉज एक्चुअली IIT भुवनेश्वर. दैट वॉज रियली गुड, रियली नाइस सेंटर आई विल से. 10 मिनट से भी कम ही लिया होगा उन्होंने. दे वर डूइंग एन एक्सलेंट जॉब ओवर देयर. आई एम वेरी ग्लैड आई गॉट दैट सेंटर. सो मैं 3 घंटा वेट किया. मैंने 3 घंटा, आई ऑलवेज लाइक, मेरा अप्रोच in 11th and most of 12th was I have to do biology first, then chemistry, then physics. लेकिन like 2 months, just 2-3 months before like NEET, NTA gave a notification कि आपका जो optional questions है वो हट गए हैं, and also you have a time of 3 hours. And when I gave some tests, I was able to understand कि अगर मैं physics को last में रख रही हूँ तो I used to panic. Yes, I used to panic कि मतलब बायोलॉजी केमिस्ट्री ख़त्म होने के बाद I used to panic a lot while doing physics. So I started doing physics in the beginning. So in the exam as well, like last महीने में जितने भी exams होते थे, the intensives, I used to do physics in the beginning, then I used to go for chemistry and biology. And in the NEET exam day also, I started with the physics section first. पहला मेरा code था 48, right?
तो फिर पहला क्वेश्चन हो गया. सेकंड, आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डिफ़िकल्टी ऑफ द पेपर. ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन से नहीं पता चलता. फर्स्ट क्वेश्चन मेरा हो गया. सेकंड आई डिड. फ्रॉम द थर्ड ओनली आई स्टार्टेड फीलिंग कि क्वेश्चन थोड़ा सा लाइक हाई है, ठीक है. देन फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन आई वाज लाइक फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन आई वाज लाइक okay, this is like something different, right? So then I looked over all the questions that were present in the physics section. I was able to understand कि ऐसा थोड़ा level तो है इसका. And I also left some questions and tried solving others. तो मेरा नहीं हुआ. I started panicking at that moment. मैंने अपने आप को बहुत बताया हुआ था कि don't panic, you don't have to panic in exam. difficult भी आया, फिर भी I was not able to control maybe on my emotions. in some difficult times we are not able to control our emotions. So I started panicking. फिर भी मैंने संभाला and I said like let's do chemistry first. I started doing chemistry and biology first. And also chemistry में भी one questions I used to feel कि हाँ थोड़ा maybe it was because like physics is also hard. So after like facing कि हाँ एक section इतना hard आया है and I have to complete that. So I need to complete chemistry like at a faster pace, right? तो वो that was causing additional panic to my paper solving. तो chemistry भी मैंने किया. I used to like मैं क्वेश्चन कर रही होंगी ना, I would have ticked one answer. Then I would again look onto that question and find, oh, what have you done, how is it the answer, और मैं उसको change करती थी. I was definitely panicking at that moment. जैसे जैसे I did my chemistry, then I went for biology. I went for biology and मैंने biology section भी किया. Some assertion reasons particularly I was like feeling कि ये होगा नहीं होगा. The assertion reasoning I had a bit of confusion, and when I completed both of my sections I saw that it was like 1 hour and 45 minutes were completed. I was like, in the rest 25 minutes let me check the chemistry and biology that I have done a bit and fill my OMR. chemistry and biology section I have to fill because मुझे पता था अगर फिजिक्स करने जाऊँगी ना तो ऐसा. और फिजिक्स मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे. इट वाज नॉट लाइक मैंने पूरा अनटच छोड़ा हुआ था. कुछ क्वेश्चंस मैंने किए थे. तो आई वाज लाइक आई हैव लेट मी फिल अप माई OMR. हाउ मच क्वेश्चंस आई हैव डन, आई हैव टू फिल माई OMR अप. अदरवाइज इन द एंड मोमेंट आई मे नॉट हैव टाइम टू फिल माई OMR. सो आई फिल्ड माई OMR जितना भी मैंने किया था. I did it. उसके बाद I went for solving my physics जितना था. तो I used to solve one question and then bubble up, right? In this manner I attended like 27 physics questions. chemistry में मैंने एक छोड़ा था. biology में I left one. तो I left total 29 questions, right? like 29, sorry गलत 27 I only attempted, right? I attempted 27 questions in physics section. So 45 minus 27 was the ones that I left. And chemistry I left one question, biology I left one question. So in total I left a lot of questions and I was really panicking कि इतने questions छोड़ दिए तुमने. I attempted the paper like 640 marks का मैंने attempt किया था. And my previous score, जैसे मैं बोलूँ कि pre-NEET I was able to score 700 marks. So I was like feeling कि ये क्या किया तुमने, बस 640 का अटेंड किया. like how is it going to happen? मुझे पता था कि कट ऑफ, I was realizing कट ऑफ is going to go less. फिर भी you only attempted 640. how is that? पिछले साल तो कट ऑफ 640 भी नहीं गया था. it was like 640 का सिर्फ अटेम्प्ट किया. and at that moment I was like giving a smile to myself and just sitting there. But later on my eyes just went nowhere because I had done a lot of hard work. मैंने बहुत पढ़ा था तो it was really heart wrenching for me. Then I went out of the center. I gave my paper. I went out of the center. I started crying. I started heavily crying, but thanks to my parents, they were very supportive of me. They were like, we know that you have studied, and अगर नहीं भी होता we will know that you have studied, and हालात ही ठीक नहीं थे. that is the reason why you couldn't. Otherwise we have seen how much you have struggled, so we are very proud of yourself, proud of you.
That really relieved me a lot, but still it was not able to console me completely. I was crying the entire evening and then just went to sleep. The previous day I woke up and I checked my paper. So from the 27 questions I attempted, 21 were correct. And biology I did 6 incorrect. Chemistry I did 3 incorrect. So in chemistry I was able to score 161, I guess. Biology 331, and in yeah and in physics I was able to score I don't remember the exact marks, but total was 570. Total was 570. Like you would take it was around 78. Yeah, physics I was able to score 78 only. I practiced physics a lot, but in the end, like, it was 78, and then 161 and 331. That is the marks. I was able to score 570. My chemistry really saved me. Yeah, chemistry really saved me. Thanks to my chemistry sirs. Sir, yeah, my 12th chemistry sir in Akash Institute is a very good teacher. Yeah. The total was 570. I was a bit worried about the results. I talked to my teachers at Akash and they said that everyone is scoring less, so it's not a matter of fact you are going to get selected. But still the anxiety continued, and to the result day I checked my OMR, like, and answer key, it was like it was +5 for me. like एक क्वेश्चन गोल्गी का आकाश का आंसर की में मैंने मैच किया था, उसका वो मेरा आकाश के आंसर की के हिसाब से गलत आया था, बट इन NTA का ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से सही था, तो आई वाज लाइक +5. बट देन एट द एंड इट वाज लाइक पॉलन वाला क्वेश्चन आकाश में अलग था, तो एंड NTA के आंसर की में अलग था, तो अगेन इट वाज -5. तो टोटल वाज सेम 570. Yeah, then the result came. I was able to score 5403 rank, and definitely I expected more, but I'm happy with what I have got. So in the end it is like you have to study. अगर पेपर हार्ड आ रहा है तो सबके लिए आएगा definitely, and I don't feel so the other year 2026 the trend, like from 2020 to 2024 what continued is going to again come back in 2026. Paper is going to be moderate to tough. Yeah, so definitely you should practice some harder level questions, and most importantly trusting yourself, believing in your hard work is most important, and not panicking in the exam center is most important. Yeah, that is how you can definitely crack NEET exam. You have to make, like, अब देखो प्रॉपर नोट्स इफ़ आई टॉक अबाउट आई डिडंट मेक, मैंने सारे के नोट्स नहीं बनाए थे. द चैप्टर्स दैट आई नीडेड ओनली आई मेड नोट्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी you don't need notes that much. Like physics and chemistry definitely you need notes, but biology was like आप बिना नोट्स के कर सकते हो. like I did without notes, but yeah, definitely because I was preparing to a level of 2023 में जैसा एग्ज़ाम हुआ था उसके लेवल से. but definitely this year what your teachers are saying, that is better for you. This year definitely I will suggest that you make notes. Yeah, as in if you are a NEET 2026 aspirant, you should make notes this year. And also definitely you should follow what your teacher is saying. Yeah, stick to one teacher, follow a book completely. ऐसे आधा इससे किया आधा उससे किया नहीं. Follow your teachers, stick to one book, stick to one teacher only for a subject. Complete one book completely, then you go for others. Test सारा देना है, analyze your tests, right? And read relevant topics, obviously. Practice a bit higher level of questions. That is how you can crack your NEET 2026 exams. And definitely I will be sharing which college I'm getting, because the counseling has not started yet, which college I'm getting, and yeah, my college tour, my hostel, I will be sharing everything. So stay tuned, and definitely like, share and subscribe if you like my video. Thank you so much.